हेलो, आप लोग थोड़ा कंफर्म कीजिए, साउंड आ रहा है ना? Yes, sir, you are on. ओके 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 ओके। So let me share my screen. So I think लास्ट डे मतलब मंडे को हम लोग ये सब किए थे, एडजस्टेड आर्ट्स कोड तक खत्म किए थे। So basically हम लोग क्या क्या देखे हैं? We have seen simple linear regression, we have seen multiple linear regression, we have seen R square, how R square works, उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी-नेट, राइट? सो जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो थोड़ा याद रखने का ट्राई करो। जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूलाज and interpretations. Okay, so suppose a value of r square is equals to 0.6. इसका interpretation क्या होगा? Okay, this type of things you have to remember. Fine. Today we are going to start generalized LAC. Okay, so before going to generalized LAC, हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. That is the error component. What is the error component? We know the regression line y equals to x beta plus epsilon. So here this epsilon is our error component. So there are several cases. Case number one, suppose the error components are not independent. First case. Second case, these error components, suppose the error components has or have no constant variance. Constant variance. What does it mean? It means the variance of epsilon that is not equals to sigma square, rather than variance of epsilon I that is sigma square for I equals to 1 to n. I mean the observations y1, y2, yn are the observations. So epsilon I error component has no constant variance, मतलब जो constant variance नहीं होगा. Or third case is that error components do not have constant variance and they are not independent. So these three can happen, either not independent or no constant variance, or both case can occur. Okay, so in that situation OLAC और जो हम लोग यूज किए थे लास्ट दिन, ऑर्डिनरी लिस्ट का एस्टिमेशन, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू डू इट. ओके, सो इस केस में क्योंकि हम लोगों को पता है कि एजम्पशन में ही था ना कि एरर वेरिएंस का जो एजम्पशन था वो सब वायलेट कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका है. वी हैव अ मेथड दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड लिस्ट का एस्टिमेशन. दैट इज जनरलाइज्ड LAC. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जनरलाइज्ड LAC क्या है. आई होप कि बाकी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, फिर भी ये थोड़ा ऑफ टॉपिक होता है ना कि रिग्रेशन का थोड़ा हायर टॉपिक्स है ये सब चीजें, तो एक बार थोड़ा थोड़ा करके हम रिवाइज कर लेंगे. तो सपोज वी हैव अ मल्टीपल linear regression model that is y equals to x beta plus epsilon. This is the multiple linear regression model where expectation of epsilon that is 0 and variance of epsilon
that is sigma square in. ये हम लोग लाजिम किए थे. So what is our assumption? Our assumption is that the variance of epsilon equals to sigma square in is violated. Okay, suppose the assumption is violated, and it becomes variance of epsilon equals to sigma square omega. So now what is our omega? Suppose we are considering a covariance matrix, and they are sigma 1 square, sigma 2 square, and sigma n square are the variances, the diagonal elements, and off diagonal elements are 0. Why 0? Because the covariance between epsilon I and epsilon j is equals to 0. Independent. Okay, it also independent. अगर independent नहीं होगा तो एक दूसरा केस आएगा. So ये जो फॉर्म है ना, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सिग्मा स्क्वायर ओमेगा. ओके, सो ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो अगर सिग्मा स्क्वायर को बाहर लेंगे ना, तो सिग्मा स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो ये आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 1. सॉरी नॉट सिग्मा 1, that is sigma square. Sigma 1 square by sigma square. Next one is sigma 2 square by sigma square. And in this way, sigma n square by sigma square. All other elements are 0. Okay. So ये जो मैट्रिक्स हो रहा है ना, इसको हम डिनोट कर रहे हैं as omega. Okay. So using this, later we will be using this in weighted linear regression also. Okay. Just do remember this thing, this setup. Okay. So omega का कुछ properties है. First one is omega is the n cross n non-singular matrix. होना चाहिए, right? अच्छा. Next one is it should be positive definite. Okay. क्योंकि अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट हो गया तो एक डायगोनल एलिमेंट 0 बन जाएगा. Next one, it is symmetric matrix. Of course, it is symmetric because all the off diagonal elements are equals to 0. अगर covariance exist करे तो symmetric नहीं होता. Okay. अब इसमें कुछ situations है. Situation number 1. Omega is diagonal, but unequal variance. फर्स्ट सिचुएशन. इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएंस हम लोगों ने यूज किए थे, दैट सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, these are unequal variances, right? So this is the first case. Okay. Second one is that not necessarily diagonal. Maybe there are some off diagonal elements. For example, if they are dependent, if epsilon I and epsilon j, दो number point है, they are dependent. If they are dependent, then off diagonal element is not 0. Okay, so in that case, we will be having a correlated errors. तो अभी हम लोग जो रिग्रेशन का जो बाकी पार्ट्स है ना, जो हम लोग करने का ट्राई करेंगे, उसमें हेटेरोस्केलेसिटी है, ऑटो कोरिलेशन है, मल्टी कोलिनियरिटी है, ये सब जो टर्म्स होता है ना, ये सारी चीज इधर से कनेक्टेड है. These are all connected from this part. Okay, so just try to understand this part very carefully. Okay, so इसमें अगर हम लोग ordinary least square estimation ट्राई करेंगे, suppose we are doing ordinary least square estimation, so what we are getting in ordinary least square estimation में क्या सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, एस्टिमेशन में क्या मिलता है, b इक्वल्स टू x डैश x, उसका इनवर्स x डैश y. Okay, and what we get, the expected value of b, that is expectation of this, that implies beta. How beta is coming? Expectation of x dash x inverse x dash y, और expectation of y का क्या आता है, x beta, so that's mean it will be beta. So obviously b is the unbiased estimator of the regression parameter beta.
and what will be variance of B? So that variance will be a कॉम्प्लेक्सुअल ओके मतलब इसका कैलकुलेशन तो कॉम्प्लेक्स है और उसका जो आएगा पहले पहले इसके पहले जो जब हमारे पास when we have the same variances then we have sigma square x dash x inverse. That was the simple variance. Okay, but right now we will be having x dash omega x dash x inverse. So that will be the variance in the case of the unequal sigmas. Okay, तो इस केस में ना जो हमारा जो वेरिएंस है ये बहुत इंक्रीज हो रहा है मतलब हाई वेरिएबिलिटी मिल रहा है. जस्ट ये पॉइंट नोट रखना कि when we are using OLAC method and there are the unequal variances exist, then the variance of beta is or having high variability. Okay, so this is not the blue. Blue तभी हो सकता है जब variance minimum होगा. Okay, variance minimum नहीं होगा तो blue नहीं हो सकता है. So we will be changing the normal equation. मतलब जो normal equation था उसको change करके we will be getting x dash omega inverse x not dash, it will be beta hat that is equals to x dash omega inverse y. So what we are incorporating, we are just incorporating omega inverse. Okay, both side में ये normal equation था बस omega inverse नहीं था last दिन जो सिंपल केस में होता है. तो बीटा हैट जो इसका जो एस्टिमेट आएगा दैट विल बी x डैश ओमेगा इनवर्स x का इनवर्स x डैश ओमेगा इनवर्स y. थोड़ा कॉम्प्लेक्सुअल है मतलब कॉन्सेप्चुअल चीजों को कैसे हम लोग याद रखेंगे. जस्ट हम लोगों को याद रखना चाहिए कि नॉर्मल इक्वेशन क्या है और नॉर्मल इक्वेशन से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसको. नॉर्मल इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वही आ रहा है हमारा गॉस मार्कअप थ्योरम से. ठीक है, सो ये जो बीटा हैट है ना, ये जो बीटा हैट हम लोगों को मिला अभी यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द GLAC, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर. ओके, सो नॉर्मल जो OLAC था, OLAC से डिफरेंस इधर कौन सा क्या डिफरेंस है, ये ओमेगा इनवर्स. This is the difference. This is the just difference between GLAC and OLAC. Okay, and in that case, the variance of beta hat that will be sigma square x dash omega inverse x uska inverse. So in that case, the variance will be minimum, and we will be getting the base linear unbiased estimator. Okay, so variance of beta hat is less than variance of B. जो पहले हम लोगों को वेरिएंस ऑफ बी मिला, वेरिएंस ऑफ बी मतलब ये जो बी है ये कहां से आ रहा है, ये OLAC से आ रहा है, और जो बीटा हैट आ रहा है ये हम लोगों को आ रहा है तुम्हारा GLAC से. ओके, सो इन केस ऑफ द अनइक्वल वेरिएंस, ओके, अगर सिग्मा वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर होता है हर एक आई के लिए, देन दे आर बोथ इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं आता. ठीक है, बस ये याद रखना चाहिए हम लोगों को. नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू वेटेड लीनियर इक्वेशन. सो वेटेड LAC क्या होता है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि हम लोग कैसे जनरलाइज्ड LAC में हम लोग एक सिग्मा जो हमारे पास क्या था, वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन का वैल्यू था सिग्मा स्क्वायर ओमेगा. तो दैट इज बेसिकली सिग्मा स्क्वायर इनटू द मैट्रिक्स. सो इस मैट्रिक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/W1, 1/W2 and 1/WN. This W1 that is equals to, that is nothing but sigma square by sigma suppose WI. WI equals to sigma square by sigma square. That is why it is called the weighted LAC. Okay, since हम लोग क्या कर रहे हैं, जो weight है ना वेरिएंस का, वो वेरिएंस का weight हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट. सो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो weight है, इस weight को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ
ओमेगास इनवर्स। सो नॉर्मल इक्वेशन में हम जो नॉर्मल इक्वेशन था, दैट नॉर्मल इक्वेशन बिकम्स x डैश w x. What is the w? W is this weights, मतलब w is the omega inverse in into beta hat, that is equals to x dash wy. Okay, so this is the normal equation जो generalized LSC से हम लोगों को मिल रहा है, वही है इधर. So in that case, beta hat will be equals to x dash wx inverse x dash wy. So that is the beta hat for weighted LSC. As simple as that. ठीक है. So basically here actually what we are doing, we are using the MLR, multiple linear regression. So if you want to consider it in a simple linear regression model, so what is the simple linear regression model? Y equals to beta naught plus beta 1 x plus epsilon. That is our simple linear regression model. And if you want to apply the weighted linear regression method, that will be our sum of squares beta naught beta 1, that is equals to sum over wi yi minus beta naught minus beta 1 xi whole square. So now you just take the derivatives of sum of squares with respect to beta naught and beta 1 and you will get the नॉर्मल इक्वेशंस. ठीक है, तो इसमें से डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? बीटा नॉट हैट समेशन डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू बीटा वन हैट समेशन डब्ल्यू वाई एक्स आई, दैट इज प्लस equals to summation wi yi. This is the first equation, and there will be second equation beta naught hat summation wi xi plus beta 1 hat summation wi xi square equals to summation wi xi yi. दो इक्वेशंस आएगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा बीटा नॉट एंड बीटा 1 हैट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब एक बार 2020 और 2019 आई डोंट रिमेम्बर, कोई एक साल गेट में गेट स्टैटिस्टिक्स जो हुआ था, गेट स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन आया था कि सपोज y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस एप्सिलॉन i, ओके, एंड वेयर variance of epsilon I is equals to sigma square. Okay, now they asked what will be the blue of beta naught. Okay, so this is basically the heteroscedastic case, and you will calculate the weighted least square estimation, and after that हम लोग दिखाएंगे कि हमारा जो OLSE हो रहा है वही हमारा ब्लू होता है यूजिंग गॉस मार्कov थ्योरम. तो ये क्वेश्चन आया था उस टाइम. तो ऐसा उतना मतलब लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में हम लोगों को मिल ही सकता है ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों को 2-3 मॉडल मतलब तुम लोग प्रैक्टिस करके जाना कि ये एक मॉडल हो गया. ठीक है, एक और मॉडल प्रैक्टिस कर लेना, y इक्वल्स टू बीटा 1 x1, sorry not x1, beta 1x plus epsilon I, xi plus epsilon I. So this is the no intercept model. So in that case अगर variance of epsilon I that is sigma square होता है, तो in that case what will be the estimated LSE or you can say weighted LSE of beta 1 square, sorry beta 1 hat. So this type of questions can come, मतलब आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो जस्ट एक बार देख लेना ये चीज. ओके, और उतना वेटेड एलएससी और जनरलाइज्ड एलएससी के बारे में डिस्कस करने का है नहीं. लोग इसको रिवाइज कर सकते हो, ये सब चीजें जो कैसे मेथोडोलॉजी मतलब एस्टिमेशन कैसा होता है, और हाइपोथेसिस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उतना बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशंस है, तो अवॉइड करना ही सही रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, आई थिंक सिलेबस उसके बाद था क्या, डमी वेरिएबल था ना. हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर वेरिएबल. ओके, इंडिकेटर वेरिएबल और डमी वेरिएबल.
जो लोग मशीन लर्निंग यूज करते हो उसमें बहुत यूज होता है डमी वेरिएबल का, लिनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन में बहुत तुम लोगों ने यूज किया है। आई नो कि ये सब चीज प्रोजेक्ट वगैरह ये सब में बहुत यूज होता है डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। लेकिन देयर आर सम पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर, जो जो छोटा छोटा पॉइंट्स है उसको हम थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना तो तुम्हारा थ्योरेटिकल जो काम होता है इसको जानने का, तो थ्योरेटिकल थिंग्स that will be cleared. Okay, so suppose all the explanatory variables we have, जितना भी explanatory variables हमारे पास है, that are quantitative। अगर x1 x2 xn सारे xi's are suppose quantitative variable, so in that case we can easily use the regression model, right? Right. Okay. So okay, and suppose all the variables are like qualitative. So in that case, we can use ANOVA, analysis of variance, right? 1 ANOVA, 2 ANOVA, that we can use, right? And if there are some variables which are quantitative and some variables which are qualitative, both, that is the thing when we can use ANCOVA, analysis of covariance model. Okay, so basically the big limitation of the regression model is that when we have a qualitative variable, for example, in a particular regression model, suppose y equals to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus epsilon, and here x1 is the quantitative variable and x2 is the qualitative variable. That is the thing of confusion, how we can apply a linear regression, multiple linear regression model for this type of data where x1 is the quantity. Look, we can easily use the variable, suppose x2. x2 is a qualitative variable which contains either 0 or 1. Okay, we can easily use that, but this is not a correct approach. Why it is not a correct approach? Because expectation of epsilon is 0 and variance of epsilon is sigma square, right? So now when we are using multiple linear regression model, उस मॉडल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों का जो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वो कोएफिशिएंट के साथ ही आता है। अगर ये जो वेरिएबल है 0 और 1 होगा and somehow particular yi contains x2 equals to 0, so for that yi beta 2 is meaningless. So if for some variables beta 2 is becoming meaningless, that is why we cannot use the regression model, क्योंकि जब हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन करने जाएंगे और प्रेडिक्शन करने, बेसिकली प्रेडिक्शन करने जाएंगे, then we do not have beta 2 and that will be a cause. Okay, so suppose हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक y है हमारे पास, एक x1 है और x2 है. Y is the quantitative variable, x1 is the quantitative variable, and x2 has two groups मतलब 0 1, male female. Okay, high low, yes no, कोई भी two groups are there in that
x2 or the qualitative variable. So now what we are going to do is we denote x2 is equals to 0 if the observation belongs to group A, and x2 is 1 if the observation belongs to group B. So we are denoting x2 as 0 or 1. Okay. So now suppose if x2 is equals to 0, then what will be the model? What is the model? Y equals to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus epsilon. Okay. So ये जो model था, that model becomes, if x2 equals to 0, that model becomes y equals to beta naught plus beta 1 x1 plus epsilon. तो वो जो हम लोग सोच रहे थे कि अगर 0 होगा कोई y का वैल्यू, then what will be the interpretation of or requirement of beta 2? So when we are separating the variable groups, and when the observation is present or group A is there, then the model is like this. So we basically what we are doing, we are dividing the single model into two models. One is when x2 equals to 0 and when x2 equals to 1. So for x2 equals to 1, we will be using different model. And what will be the model? Beta naught plus beta 2 plus beta 1 x1 plus epsilon. Okay. So basically here we are using two different model for two different groups. That is the way. That is the way we should approach for an indicator variable. Okay. So if that is true, then what is the expectation of y given x2 equals to 0? That will be beta naught plus beta 1 x1. And what is the expectation of y given x2 equals to 1? That is beta naught plus beta 2 plus beta 1 x1. Okay. So basically here we are getting two different models, right? So what is the value of beta 2? Beta 2 will be the difference between two expectation. Okay. So expectation of y given x2 equals to 1 minus expectation of y given x1 equals to, x2 equals to 0. So देखो, look at the expected values of 1 and 2. So we will be getting beta 2. So this is how we obtain the parametric or the estimate value of beta 2. ओके. तो इसको अगर और अच्छे से हम लोग समझना चाहेंगे ना, तो ये थोड़ा सीखने के लिए मैं दिखा रहा हूँ. इट इज नॉट नेसेसरी, बट इसको अगर सपोज वी वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट मॉडल्स, दो मॉडल जो है उसका डिफरेंस क्या है, और जियोमेट्रिकली और ग्राफिकली हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? So here there are two regression lines basically. So one is for x2 is 0 and one is for x2 is 1. So this line जो नीचे है, suppose it is our beta naught. So and it is our beta naught plus beta 2, because this is the intercept. This is the intercept of two models, and this is our expectation of y given x2 equals to 0 equals to beta naught plus beta 1 x, and this line, that is y expectation of y given x2 equals to 1 equals to beta naught plus beta 2 plus beta 1 x. So here the intercepts are different, beta naught and beta naught plus beta 2. So what is the gap between two regression lines? They're both parallel. Why parallel? Because the regression slope all same, both are beta 1. Since the regression slopes are same, so that is the there are two parallel lines we are getting.
So what we have started, we have started with the regression model where one is quantitative, one is qualitative, and we divide the model into two models. One is for x2 equals to 0, another is for x2 equals to 1. So here we are representing these two models, two different models. Okay, two different straight lines or for regression lines. Okay, so this is how we actually use the indicator variable. Okay, so basically you have seen is suppose we have m number of levels. Okay, m number of levels means for a particular variable, qualitative variable, there are m number of levels, and so that we use m number of m minus 1 number of indicator variables. I think ये तुम लोगों ने सुना है कि ये it is rule of using indicator variables कि suppose we have m number of levels, so we are using m minus 1 indicator variable. So बेसिकली हम लोग क्या किया इधर, हम लोग जो हमारे पास एक ग्रुप में 2 लेवल था, सो हम लोग एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर वेरिएबल हम लोग यूज किया व्हिच इज आवर वेरिएबल x2 0 और 1. सो सपोज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए. सपोज देयर इज अ qualitative variable with 3 groups. One is group A, one is group B, and one is group C. Okay, there are 3 levels of suppose a variable. Okay, so what we are going to do, we will consider 2 indicator variables, suppose x2 and x3. So how it works, x2 is equals to 0, x3 equals to 0 if observation comes from group A. अगर ग्रुप ए से ऑब्जर्वेशन आते हैं, so in that case we will be considering कि x2 x3 both are 0. x2 equals to 1, x3 equals to 0 if observation comes from ग्रुप बी. देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने x2 के ऊपर ही काम किया, x2 को either 0 or 1. Okay, that means group C is not present. When group C is present, then x3 will be 1 and x2 will be as usual 0. So if x3 equals to 1, that means group C is present. Okay, if observation comes from group C. So now what we'll be having a regression model like this: y equals to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus epsilon. So where x1 is the quantitative variable जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था, and x2 and x3 is our indicator variable. So since we have 3 levels in the qualitative data, that's why we are using 2 indicator variables. So when we'll be having m number of levels, हम लोगों ने यही पहले स्टार्ट किए थे बोलना कि m number of levels अगर हम लोगों के पास होगा, we will be using m minus 1 indicator variables. Okay, so ये थोड़ा तुम लोग इंडिकेटर वेरिएबल्स के बारे में याद रखना. बाकी सारे चीजें एप्लीकेशन है इंडिकेटर वेरिएबल का ऊपर, सारा एप्लीकेशन ही मोस्टली है. मतलब अगर तुमको एक मॉडल दे दिया और बोल दिया कि इंडिकेटर वेरिएबल लेना है तो कैसे लोगे तुम, ठीक है. सो दैट्स द थिंग, और कुछ नहीं है इंडिकेटर वेरिएबल के ऊपर ज्यादा कुछ. इसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मल्टी कोलिनियरिटी. तो ट्राई करने की जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर
जो रिग्रेशन चैप्टर यूनिट 6 के अंदर एक एक चैप्टर हम लोग कवर करें, ठीक है, अच्छे से। अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो ये जो तुम नोट होगा, ये नोट तुम पहले पढ़ लो पूरा, जितना भी चीजें हैं एक जगह पे रहे, ठीक है। सो मल्टीकुलरिटी तुम लोग को पता है कि कोरिलेशन इज हाई, ओके, बट थियोरेटिकली हम लोगों को देखना होगा कि मल्टीकुलरिटी का एक्चुअली क्या क्या इसके अंदर एस्टिमेशन कैसे हो सकता है, क्या क्या इन्फरेंस क्या क्या निकल सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज हम लोगों को देखना है, ठीक है। सो first of all, we will start with the assumption of multiple linear regression. Assumption of multiple linear regression. So I hope you guys remember there is the assumption rank of the matrix X. X कौन सा है? ये जो मॉडल था y equals to x beta plus epsilon. In this model we have the X matrix and इसका जो रैंक था, रैंक ऑफ द एक्स मैट्रिक्स, रैंक ऑफ एक्स, दैट शुड बी इक्वल्स टू के. व्हाट इज के? के इज द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, number of explanatory variables present in the data. Okay, so basically जो फुल रैंक मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं उसका एग्जांपल हम लोगों ने लिए थे, right? But somehow we can get the rank of x is less than k. Okay, and if it happens, that is the case of multicollinearity. Okay, so basically हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीकुलरिटी चेक करने के लिए we usually use the correlation matrix. Using correlation matrix, using variance, VIF, inflation factor. Okay, these type of things we basically use. But theoretically, if we consider, if we look at the assumption of MLR, so if the rank of X is less than K, there is a problem. There is a condition that may be high multicollinearity. So basically, multicollinearity is not an issue. Multicollinearity means the correlation between all the multiple explanatory variables. But when the correlation is high, that means the high multicollinearity. High multicollinearity is an issue. Okay, multicollinearity always presents. We can always measure multicollinearity. Okay, but high multicollinearity is an issue. So there is one more thing you have to understand. We consider that explanatory variables are independent. That is one of the main assumption for linear regressions, right? So if they are highly correlated, that means there is a chance of high multicollinearity. ठीक है, सो अभी हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ y equals to xb plus epsilon. So this is the regression model. So इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे ना, तो अच्छे से लिखते हैं, y उसका डायमेंशन इज n क्रॉस 1, दैट इज इक्वल्स टू x, उसका डायमेंशन n क्रॉस k, उसके बाद आता है बीटा, उसका डायमेंशन k क्रॉस 1, उसके बाद आता है एप्सिलॉन, उसका डायमेंशन होता है n क्रॉस 1. And here epsilon that follows normal distribution with 0 and sigma square in. ये हम लोगों का assumption था, right? So one more thing, just let me tell you, x n cross k, right? So obviously n, what is n? N is the number of observations, and what is k? K is like the number of explanatory variables, right? So obviously in multiple linear regression or basically what we are using, n should be greater than k.
right? If n is less than k, that is called an high dimensional data. Okay, so in that scenario, we cannot use multiple linear regression model. Okay, so we basically use multiple linear regression model for only for low dimensional data. If it is multiple, if it is high dimensional data, we cannot use it. Okay, fine. तो अभी टॉपिक में वापस आते हैं. Is the suppose there is no intercept. Okay, fine. मैंने मिस कर दिया, इसको छोड़ दो, इंटरसेप्ट नहीं चाहिए, ठीक है. आपको जस्ट लुकिंग विद द y इक्वल्स टू बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2, ओके, बीटा kxk plus epsilon. Just look at this model. Okay. First of all, to check whether it is high, it contains high multicollinearity, हम लोग क्या करेंगे, जो xi's, yi's we consider or we transform is in a centered value. Centered or you can say scale. तो स्केल का मतलब होता है कि मीन x minus mu by sigma स्केल करते हैं, ठीक है. So if it is scaled data, then x dash x ये क्या होगा? If it is scaled data, x dash x becomes the correlation matrix, or you can say the correlation matrix of correlation, you can say correlation matrix between the explanatory variables. Okay, x dash x and x dash y. Why we are writing this? Because of the normal equations. Because we are solving the normal equations, right? So we have to understand what does it mean, what does it implies. Okay, so x dash y, that is what? That is the dimension of this is like k cross 1. कि x dash का dimension हो जाएगा k cross n and y का dimension n cross 1. So ultimately that becomes x dash y will become k cross 1. Okay, so just yeah, okay, that is the vector of correlation coefficient between x and y. What is our x? X is the explanatory and the study variable. What is the study variable? Y. Y is a study variable. So when we are trying to find the correlation coefficient between x and y, or means explanatory and study variable, we can use x dash y. And when we only want to find the correlation between the explanatory variables, we have to use x dash x. Okay. So now इधर जो हम लोगों ने वेक्टर ले रहे हैं ना, x वेक्टर इज लाइक x1, x2, xk. There are k explanatory variables. So for one xj, कोई एक xj के लिए अगर summation li xj, sorry, lj xj, where this is the linear combinations of lj, l1, l2 up to lk, I equals to 1 to k. Okay, 0 अगर आता है इसका summation, मतलब the linear combination. Okay, then we will say they are linearly dependent. Okay, अगर ये hold करता है कि 0 अगर hold करता है, that implies they are linearly independent, and that implies rank of x dash x is less than k. क्योंकि one of the particular column will be dependent, so basically rank कम हो जाएगा k से, one or more than one, कोई भी हो सकता है. Next one is that if it is true, if it holds, then x dash x inverse does not exist, क्योंकि determinant तो 0 हो जाएगा. If the determinant is 0, then how can it
how can we calculate the inverse? So inverse does not exist, and this condition, मतलब जो ये जो condition बना है इसका, and that situation x dash x becomes ill conditioned. इसको हम लोग बोलते हैं इल कंडीशनड, ठीक है। तुम लोग एक बार इल कंडीशन के बारे में और 2-3 चीज पढ़ सकते हो, और भी बहुत जगह पे मिल जाएगा। इल कंडीशन हम लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में बहुत जगह पे, एंड दैट रिजल्ट्स आवर हाई मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम, दैट रिजल्ट्स द multicollinearity problem exists. Okay, so this is the thing that we have to understand कि multicollinearity बस correlation calculate करना नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कि correlation high है, मतलब we are seeing the correlation matrix of xi and yi, x and y, तो उसमें देखा कि हम लोगों को x1 x2 के अंदर बहुत हाई कोरिलेशन है, तो डजंट मीन कि उसका मल्टीकोलिनियरिटी हो सकता है। मल्टीकोलिनियरिटी, यस देयर इज अ चांस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, बट वी हैव टू कंसीडर सम टेस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैं तुम लोगों के लिए कुछ पढ़ने के लिए दे दूंगा, जैसे कि मान लो तुम लोग ये देख लेना एक बार, द रीजंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, व्हाट आर द रीजंस ऑफ, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल है ये सब चीजें, बट कभी भी आ सकता है कि मान लो यू आर गिवन 4 ऑप्शंस, ओके, एंड चारों ऑप्शन में बोल दिया व्हाट आर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन बी लीड टू मल्टीकोलिनियरिटी, ओके, इन रिग्रेशन मॉडल। तो चार ऑप्शन दे देते हैं, तो एक बार मतलब अगर तुम ऑप्शंस पढ़ लोगे कि कौन सा ऑप्शंस दिया हुआ है, तो उसमें चेक देख पाओगे कि हाँ ये रीजंस हो सकता है मल्टीकोलिनियरिटी का, एक ही तो ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, तो ऐसा चीज रह सकता है, ठीक है। ओके, तो ये एक्सआई हुआ या इंडिपेंडेंट ये सब चीजें इसमें है, इसमें हम घुस नहीं रहे, हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं मल्टीकोलिनियरिटी कैसे निकाल लेते हैं उसके बारे में। So suppose we are having a model like y equals to beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus epsilon. Suppose we have this model where variance of epsilon is sigma square in and expectation of epsilon is 0. ये भी तो हम लोगों को चाहिए होता है ना, expectation of epsilon 0. Okay. And covariance between x1 and x2, not covariance, let me write it correlation, CORR, correlation. covariance का कोई मतलब नहीं होगा इसमें, एक बार फ्रेश करके लिखते हैं। expectation of epsilon 0, variance of epsilon sigma square in, and correlation coefficient between x1 and x2, that is equals to R. So there exists a correlation between x1, maybe it may be 0. ओके, 0 भी हो सकता है, हम लोग अभी उस पर नहीं जा रहे, हम लोग बस सिंपली ओवरऑल देख रहे हैं कि कैसा है। एंड ऑल्सो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 and y, that is suppose r1y, and correlation between x2 comma y, that is r2y. So what will be our x dash x? So that will be r 0 0 r, sorry, not 0, that will be 1, basically 1 1 r. Okay, that is the, sorry, well, let me check, गलत लिख दिया मैंने, क्या गलत लिख दिया, that is 1 1 r. Okay, and here x dash y, that is a simply a vector, okay, and that is r1y and r2y. Right. So this is the setup, x dash x and x dash y. तुम लोग ऐसे भी डेटा अगर पास हमारे डेटा है तो निकाल सकते हैं हम लोग इस चीज, ये छोड़ो, ये सेटअप हमारे पास है। Right now what we are trying to find is the estimate,
So if you use the normal equation x dash x b equals to x dash y, that will give, let me write it, b1 equals to, इसको ट्राई करना, ये a आएगा r into r2y divided by 1 minus r square, or b2 will be, because we do not have any sum of squares, because हम लोग पहले एकदम starting में when we use the normalization or the क्या कहते हैं हम लोग ने, एकदम एकदम स्टार्टिंग में हम लोग सेंटर्ड वैल्यू ले लिए थे, नॉर्मलाइज कर लिए थे, स्केल कर लिए थे ना, तो दैट फॉर दैट रीजन वो सब नहीं है, वो सब वन है वैल्यू, तो only correlations will be there. So that is r2y minus r into r1y by 1 minus r square. So this ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर मल्टीकोलिनियरिटी है, ओके, और मल्टीप्लाई नहीं भी है, कोई बात नहीं, नहीं भी है, अगर हम लोग if we use a centered data, normalized data, then we'll be getting b1 b2 like this. Okay, and if you do use expectation of b1, that will be beta 1, expectation of b2, that will be beta 2. So obviously it is unbiased, but variance of b1 equals to variance of b2, that will be sigma square by 1 minus r square. If you calculate this, you will get the variance of this. Now look, if r is 0, that means variance of b1 equals to variance of b2, that is sigma square. So it is blue. So basically if r is 0, then b1 b2 is r blue of beta 1 beta 2 respectively, right? So if correlation coefficient is equal to 0, then it is fine. Okay, we can use that thing, right? But that is a catch. What is the catch? If r is suppose मान लो हमारे पास r का वैल्यू है 0.5. So in that case, variance of b1 is equals to variance of b2 equals to, that will be 0.25 minus 1, that is 0.75. How comes 1 divided by 0.75? That will be 1.33 sigma square. So yeah, okay. So इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर हम लोग के पास अगर r का वैल्यू इंक्रीज होगा, जो वेरिएंस है वेरिएंस का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा. So variance is proportionally increasing with the value of r. r increase हो रहा है तो variance increase होगा. For example, r equals to minus 0.5. So same 1.33 sigma square. Okay. In this way, if we have r equals to plus minus 1, then variance of b1 equals to variance of b2 tends to infinity. Okay, so basically we have infinite, मतलब ये जो नीचे हो रहा है 1 minus r square, 1 minus 1 हो जाएगा, मतलब नीचे तो 0 आ जाएगा. तो that is why देखो r कभी हम लोग जो r का वैल्यू है कभी भी 1 पहुंच नहीं सकते, 0.9999 आएगा. तो obviously it will be very large. Okay, variance will be very large. So when r is high, that means multicollinearity is regarded as harmful. Okay, so when r is low, that means the multicollinearity is not harmful. When r is high, the multicollinearity is harmful. Okay,
मल्टीकुलरिटी इंक्रीज होने से मतलब आर का वैल्यू इंक्रीज होने से प्रॉब्लम हो रहा है, उसका आंसर इधर ही है। ये वेरिएंस जो होता है, हम लोगों को क्या देखना है कि जो हमारा जो ओएलएसी है, ओएलएसी इज द ब्लू, गॉस-मार्कov थ्योरम बोला था हम लोगों ने, लेकिन assumption वायलेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द assumption is violated, now we do not have the blue. We had the blue when the assumptions were made. Why the assumptions were made? For the Gauss-Markov theorem. Gauss-Markov theorem says that. But when we do not have the assumptions correctly specified or misspecified, जो भी है assumptions वायलेट हो रहा है, that इसका मतलब क्या है कि हम लोगों के पास जो वेरिएंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और मल्टीकुलरिटी मतलब आर का वैल्यू जब इंक्रीज होगा, वेरिएंस का वैल्यू इंक्रीज होगा, एंड दैट्स व्हाई मल्टीकुलरिटी हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तुम लोगों को याद रखना है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट वन इज दैट, जब मल्टीकुलरिटी ज्यादा होता है, हाई मल्टीकुलरिटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आता है, what are the problems we face due to high multicollinearity? So due to high multicollinearity क्या क्या फेस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जो ऑर्डिनरी लिस्ट का एस्टिमेशन है वो तो रहेगा ना। सो ऑर्डिनरी लिस्ट का एस्टिमेशन estimator remains an unbiased estimator of beta, हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, but the variance becomes very large। ये पहला पॉइंट है, ये याद रखना है, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लू, सो दैट इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी है ब्लू का, ब्लू डज नॉट होल्ड एनीमोर। फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस द फर्स्ट प्रॉब्लम, ब्लू का जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं हो रहा है। दूसरा, सेकेंड वन इज, जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे थे, null hypothesis was beta I equals to 0, and alternative is suppose beta I is not equal to, not 0, we just let me write it like beta I0 not equal to beta I naught, beta I naught के साथ इक्वल हो रहा है और नॉट इक्वल हो रहा है। सो इस केस में हम लोग यूज किए थे टी स्टैटिस्टिक, that was beta bi, which is the estimate of beta I, and root over of variance of bi. So now if variance of bi increases, so हम लोग ने क्या देखा कि variance of bi increase हो रहा है। So if variance of bi increases, then इसका मतलब क्या है कि t का वैल्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि bi is constant, bi is not changing, what is changing, the variance is changing, so variance increasing मतलब क्या, t का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है सिंपली। सो इफ t is decreasing, अगर t का वैल्यू इतना डिक्रीज हो जाता है, all the time the t statistics will be, so रिलेशन का रूल क्या है, रिजेक्ट h naught if absolute value of t is greater than t tabulated, okay, but when t is very small, it never exceeds the tabulated value in numerator. Yes, right, bi minus beta I naught, okay. So basically usually when we test the hypothesis, we basically assume that our hypothesis beta is equals to 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि there is no importance of this particular parameter beta I, okay। So इसको हम अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका जो, yes, right, basically we do that, but somehow we can write beta I naught which is equals to 0, okay, fine।
Now what I am trying to say that if test statistics is very small, it can never exceed the tabulated value. And in this way, null hypothesis will be always accepted. So suppose we have beta 1, beta 2, beta 3. So we have different regression parameters, and what we are seeing, all are zero. All are zero. So what we actually do, we have a regression model and we test the hypothesis for regression slope for beta 1 or regression coefficient beta 1, beta 2, beta 3, and check whether the hypothesis rejected or failed to rejected. If beta 1 is failed to rejected, matlab beta 1 is equals to 0, that means the variable is not required. The regression coefficient of that particular variable is not or is not influenced to the model. मॉडल में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, और यू कैन से लाइक जो वेरिएबिलिटी है उसका खूब बहुत कम पोर्शन एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है. सो मल्टीकुलरिटी अगर होगा ना, तो इन दैट केस इफ वी हैव हाई मल्टीकुलरिटी, इन दैट केस द वेरिएबल विल बी अफेक्टेड. मतलब वेरिएबल मॉडल से निकल ही जाएगा. ओके, so we do not need to remove the variable. Variable तो important है, but due to multicularity it is removed. So this is the problem when we have multicularity. Another problem is that the confidence interval. So what is the confidence interval? Third point is the confidence interval. So confidence interval bi plus minus t into root over variance of bi. So this is the confidence interval. So if variance of bi is sigma square, then it is the confidence interval is good. But when we have variance of bi is like 10 sigma square, okay, तब क्या होगा? Then we will be having a wider confidence interval. मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो भी बड़ा हो जाएगा. सो सेम कॉन्फिडेंस लेवल यूज कर रहे हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल 95% कॉन्फिडेंस लेवल यूज कर रहे हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएंस प्रॉब्लम वी आर हैविंग अ वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल. So basically in statistics we do not want a wide confidence interval. We always want a short confidence interval with high confidence level, right? But somehow due to the higher variance we are getting a higher or wider confidence interval. So this is the problem. This is the problem occurs when there is high multicollinearity. Okay, so fine. नेक्स्ट हम लोग मल्टीकुलरिटी के बारे में और 2-3 चीजें यूज कर सकते हैं, मतलब डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ टू चेक द मल्टीकुलरिटी. तो उसका भी तो कुछ प्रोसेस होना चाहिए. एक है कि हमारे पास वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर. दिस इज द वेरी गुड in terms of detecting the multicollinearity, but there are several ones. So सारे का सारे जानना है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में. So multicollinearity diagnosis. Look, there are 10 chapters in UGC-NET. Okay, so chapters, this is the chapter 6 and there will be 100 questions. So within 10 chapters there will be 100 questions. So basically from each chapter we are expecting there will be 10 questions. So from this chapter 6 we are assuming the expected number of questions that come is 10. Okay, that means one question should come from simple linear regression, one should come from multiple linear regression, one should come from the GLM or linear model Gauss-Markov theorem, one should come from multicollinearity, one from heteroscedasticity, one from autocorrelation, one from indicator variable,
and there are 2-3 others from the last part, the econometrics part. So that is my prediction. That should be the prediction. Okay. तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही मतलब डेप्थ से तो आएगा ही ना, अगर एक एक जगह से के क्वेश्चन आता है तो दैट्स व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कुछ भी छोड़ना नहीं है. So there are different methods to diagnosis the multicollinearity. For example, one, determinant of x dash x. So हम लोग क्या कर सकते हैं कि x dash x का डिटर्मिनेंट निकालेंगे. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ x dash x 0 आ गया, that means it is singular. Okay, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब उसका रैंक आता है, रैंक ऑफ x dash x is less than 10. So basically, first method is to calculate the determinant of x dash x. Second, correlation matrix. Correlation matrix. It is an easy way to check the multicollinearity, whether there may be a multicollinearity situation in the statutory variables. Okay, so correlation matrix में हम लोग देखते हैं कि what is the value of the correlation coefficient. R का वैल्यू होता है. So R का जो वैल्यू है वो R का वैल्यू हम लोगों ने we have to check. Next one is BIF. So could you please show that second point once again? Yes, correlation matrix. That way, basically what we are trying to say that we check the correlations of every variables, explanatory variables. Okay. ये तो basically हम लोग करते हैं ना ये चीज. Acha, and whichever one has the maximum correlation, so we'll say that there's chances of high multicollinearity. Yes. I mean, this is just a way to detect whether there would be multicollinearity or not, right? Yes. So basically there are different approaches. Okay. So if we have a high multicollinearity, if we see that there is a chance of having a high multicollinearity, what do? We remove the variable from the data set and then again run our model. Okay. So if you are having, suppose xi and xj are having high correlation, so we remove either xi or xj. दोनों में से कोई एक को remove करते हैं हम लोग. So there is also a possibility that, for example, xi is the cause. Maybe होता है कि correlation का क्या जानते हैं हम लोग? Correlation doesn't imply causation, right? ये तो हम लोगों को पता है. We know that correlation doesn't imply causation. So we have to understand whether xi or xj, which one is the causation of high multicollinearity or not multicollinearity, high correlation. So then we remove that particular variable. Okay. Followed, sir. Followed. Okay. Next one is the BIF. So BIF का measurement use करता है by using the coefficient of determination. So for example, we are having a variable xj and we are checking whether xj has high multicollinearity. So BIF of j, that is 1 by 1 minus rj square. So here we know what is r square. R square is basically the coefficient of determination. Okay, but what is rj square? So rj square, that is the coefficient of determination obtained while xj is regression. Regression matlab we are considering xj as the dependent variable on the remaining k minus 1 variables. So I hope you guys already study the multiple correlation, partial correlation. There was a concept of regression
and this is the regression xj. So basically what we are doing, we are considering xj as a dependent variable and all the other variables are independent. Then we fit a model, and from here we calculate r square. How do r square is calculated? Sum of squares of error divided by sum of squares of total. This is how we calculate the rg square and use it to find the variance inflation factor. Okay, so I hope कि इधर तक बहुत मतलब मल्टी कोरिलेट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ऐसा ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि what are the tick which of the following is the cause of multicollinearity, tick which of the following can be used as a measure of multicollinearity, ठीक है। उसमें से दे दिया कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन, वेरिएंस इंफलेशन फैक्टर। तो तुम लोगों को पता है कि वेरिएंस इंफलेशन फैक्टर विल बी द मेजर ऑफ मल्टीकोलिनिटी। ओके, सो तो अभी अभी VIF के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो VIF का जो वैल्यू है, जो VIF का वैल्यू अगर 5 से ज्यादा, ये थंब रूल होता है, 5 या 6 से ज्यादा है, देन वी कंसीडर इट इज अ हाई मल्टीकोलिनिटी वेरिएबल। ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है। VIF 5 से ज्यादा मतलब क्या है कि इफ VIF is greater than 5, 1 by 1 minus RJ square is greater than 5, right? So that means basically RJ square is greater than some of 0.8 something. So maybe some people consider is 0. The coefficient determination is greater than 0.9 or 0.75. यूज कर सकते हैं, but standard is VIF का वैल्यू अगर 5 से ज्यादा है, that case we consider it as a multicollinearity. Okay, so now last point about multicollinearity is how to avoid it. How to avoid multicollinearity. First of all, first point is that suppose we have small sample size. If we have small sample size, this is obvious that somehow there may be no causation, but still there is high correlation. Okay, for example, we have 10 data, n is 10, n is 20. So if we increase the number of sample size, okay, number of samples, if we increase the number of samples, the correlation will be lower. Okay, correlation धीरे धीरे कम होता जाएगा. So we should have more data. First point, ये बहुत उतना important नहीं है, more data. दूसरा point, it is important जो अभी मैंने बोल रहा था just 2 मिनट पहले कि drop the variable which is or variables which are collinear. जो कोलिनियर है उसका हम निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, सब देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि x डैश x उसका जो इनवर्स है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग तो जी इनवर्स ट्राई नहीं किया था. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज जी इनवर्स. So G inverse basically helps us not to remove any data, not to remove any column. ठीक है, तुम G inverse यूज करो, OLS मिल जाएगा और ब्लू हो जाएगा. हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा था, ब्लू ही नहीं आ रहा था, वही तो प्रॉब्लम था ना. सो बेसिकली यू यूज G inverse, you will get the blue. ओके, ये बहुत ही मतलब यूजफुल एक अप्रोच हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एक और मेथड है. देखो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग सम कॉलम्स. जो दूसरा नंबर पॉइंट में जो है, वी आर रिमूविंग सम वेरिएबल्स फ्रॉम द डेटा सेट. So there is another way that is called principal component. So what is principal component? That removes the or that shorten the number of variables. So we can use principal component
प्रिंसिपल कंपोनेंट रिग्रेशन, और एक और है वी कैन यूज रिच रिग्रेशन. रिच रिग्रेशन, इट इज अ पेनलाइज्ड रिग्रेशन टेक्निक. रिच रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, आई होप तुम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा होगा कहीं ना कहीं. तो ये एक पेनलाइज्ड टेक्निक्स होता है, रिच लेसो. तो रिच रिग्रेशन वी कैन यूज टू अवॉइड द मल्टीप्लाई. फाइन. तो ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखना और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना. नेक्स्ट, हम लोग बहुत टाइम हो गया है, हम लोग को जल्दी से और टॉपिक कवर करना है. हम लोग चलते हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी के बारे में. हेटेरोस्केडास्टिसिटी, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी? सो बेसिकली हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एमएलआर से. सो व्हेन वी स्टार्ट विथ एमएलआर मॉडल, एमएलआर मॉडल में क्या था कि व्हाट वाज द एमएलआर मॉडल? y equals to x beta plus epsilon. So here our assumption was variance of epsilon is equals to sigma square in, right? And covariance of epsilon I epsilon j, that is 0 for I not equal to j. So that means there is constant variance and the errors are independently distributed. Okay, those are the two main assumptions. Suppose this assumption is violated. For example, if variance of epsilon I, that is sigma I square, for example, I equals to 1 to n. So this is a case of heteroscedasticity. So कैसा दिखता है? Is for in that case how the variance covariance matrix will look? Variance of epsilon is the diagonal of sigma 1 square sigma 2 square. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने weighted linear regression यूज किया ना इसमें. So yeah, but now we are talking about heteroscedasticity. How we can see, और कैसे पता चलेगा heteroscedastic है या homoscedastic है? We do not have any information about sigma square, sigma I square. How we can find whether it is heteroscedastic or homoscedastic? For that, we can use a graphical model. We can use some hypothesis testing. बहुत सारा टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है. First of all, let's start with a graphical method. I don't know कि ग्राफिकल कोई फिगर देके तुम लोगों के क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं नेट पे, वो पता नहीं है. बट गेट पे तो पूछता है और सीएसआई में भी पूछता है. तो देयर मे बी वो है कि यूजीसी-नेट में भी दैट क्वेश्चन माइट कम. देयर इज अ ग्राफ एंड यूजिंग द फिगर यू हैव टू गिव सम स्टेटमेंट और यस नो, कुछ भी हो सकता है. लेट्स सी द ग्राफिकल मेथड. So in graphical method, what we are going to do is plot the predicted value and the errors. Okay, मतलब prediction error जो हम लोग यूज करते हैं ना, prediction error epsilon. Suppose this is the predicted value and this is the errors x and y. In x, we are using predicted value. In y, we are using errors. And the data point will look like this. Okay. And suppose this line indicates 0. Why 0? Because we know that expectation of epsilon is 0. So if you consider all the data points, that points means predicted and errors का जो points है इधर, if you consider all the data points, you will definitely get expected value of epsilon is coming 0. देखो सबका साम लो, साम करके ऑलमोस्ट 0 के आसपास ही है, क्योंकि कुछ नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव से कट जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके. एंड हर एक जगह पे इधर 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 हर एक जगह पे जो वेरिएशन है, एरर का जो वेरिएशन है, that is also constant. So variance of epsilon is also constant.
So that means our result is not, sorry, not biased, मतलब unbiased होगा, unbiased and homoscedastic. So basically, many people use the actual versus error. Many people use weighted versus error. कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ले लो. Okay, both are same. We want the distribution of errors. You want to see how error is performing. Whether expected value of errors is 0, variance of errors is sigma square. We want to figure out this, only this. Okay. So in this figure, we can see that expected value unbiased and homoscedastic. Now we see another diagram. Suppose this is our x, this is our y, this is 0, and the points are like this. So here, if you see the expected value, expectation of epsilon is 0, because if जो भी नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव पे भी होगा तो धीरे धीरे 0 की तरफ चला जाएगा, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 हो जाएगा, सम करोगे तो 0 आएगा. ठीक है, बट द वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन दैट इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज ये शुरू में देखो जो वेरिएशन था एप्सिलॉन आई का वो था कम, बाद में एप्सिलॉन आई का जो वेरिएशन है दैट इज क्वाइट ब्रॉडर, वाइडर, variation is increased. So basically here we are having variance of epsilon that is not equal to sigma square. हर एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है, कोई जगह पे कम है, कोई जगह पे ज्यादा है. So that is why it is unbiased, still unbiased, but heteroscedastic. Okay, another diagram. ये थोड़ा थोड़ा चीजें तुम लोग अगर डायग्राम के बारे में देखोगे तो याद रहता है चीजें. So x and y, suppose this is biased and homoscedastic. I hope you understand why it is homoscedastic, because जो रेंज है, वेरिएशन है, वो हर एक जगह पे सेम है. ठीक है, लेकिन मीन 0 नहीं हो रहा है, मीन 0 नहीं आएगा. So this is biased and homoscedastic. Another example, if you want to see ऐसे, ये भी biased है and homoscedastic है. Why homoscedastic? Because ये जो इसका जो वेरिएशन है हर एक जगह पे सेम है, that is why it is homoscedastic. And उसी इसमें कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन में वेरिएशन शुरू में कम था and after that it is getting wider. So it is heteroscedastic situation and also biased. It is biased, it is heteroscedastic. मैं थोड़ा अवॉइड करूँ, बस समझने के लिए काफी है ये चीज. ठीक है, so graphically we can easily see whether our model is getting or sigmas are not equals, getting heteroscedastic model or not. But how can we measure it using theoretically? So there are different tests. Okay, so test for, I think इतना सारा टेस्ट है, उतना हर एक टेस्ट में क्या क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये सब आई थिंक उतना नहीं चाहिए. तुम लोग चेक कर सकते हो हर एक टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या क्या है, but still we are fine with that. Okay, फ्लेक्सिबल हो सकते हो उसमें, इतना टेस्ट स्टैटिस्टिक ये रखना पॉसिबल ही नहीं है. स्टिल ट्राई करना, याद रख सको. ओके,
So first one is the Bartlett test. Okay. So हम लोग एक्चुअली करते क्या है बार्लेट टेस्ट में हम लोगों का जो एजम्पशन है वही है कि जितना भी वेरिएशन जो नाल हाइपोथेसिस है जितना भी वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा n स्क्वायर, दिस इज आवर null hypothesis and alternative is one of the sigma is not equal. Okay, so बेसिकली हम लोग इधर वही एक एमएलआर मॉडल यूज करेंगे, एमएलआर मॉडल यूज करके एक टेस्ट स्टैटिस्टिक आएगा, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा काई स्क्वायर। हम लोग को ये गूगल में मिल जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं इतना आगे नहीं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट। तो याद रखना ये एक काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक है, बार्लेट टेस्ट। इसके अलावा और भी टेस्ट है, एक है तुम्हारा वाइट टेस्ट बोल के एक है। बार्लेट टेस्ट का एक स्पेशल फॉर्म है ब्रूस पेजर टेस्ट। एक है पिक टेस्ट। पिक टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, सो इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज Spearman rank correlation test. It is a Spearman's rank correlation test. Spearman rank correlation test में क्या होता है कि जो दो कोरिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग ना, तो कोरिलेशन को एज अ स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, दैट इज t इक्वल्स टू r n-2 divided by 1 minus r square. This is the statistics we usually use for applying Spearman rank correlation test. Okay, so these are some important tests. Okay, ये सब कौन सा टेस्ट हेटेरोस्केस्टिक मॉडल देखने के लिए यूज करते हैं वो तुम लोग इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज Statistic T distribution will follow how many degrees of freedom, like based on the number of parameters. Could you please tell that once again? जो स्पीयरमैन में ना हाँ Spearman n-2 होगा। ओके, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की उसका जो ये जो टेस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग ना, दिस इज द टेस्ट ऑफ कोरिलेशन टेस्ट वेयर null hypothesis r equals to 0, alternative is r not equals to 0. Okay, so the distribution of r into root of r n-2 by 1 minus r square, that is t with degrees of freedom of n-2. Right. This is the test for population correlation coefficient for two variables x and y. If you want to use two correlation coefficient, suppose you want to use null hypothesis r1 equals to r2, alternative r1 not equals to r2, that will be a complex test, that is a z test, I guess. एक फॉर्मूला है उसका, लॉग का कोई फॉर्मूला है। ओके, सो दिस इज द टेस्ट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वन सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, टू सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, फाइन। सो एक और दो तीन चीज मैं बोल देता हूँ कि एस्टिमेशन जो हम लोग हेटेरोस्केलेस्टिक मॉडल है उसमें एस्टिमेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, दैट पॉइंट इज OLAC. So OLAC remains unbiased. ये तो हम लोग we are talking about particularity, we are talking about heteroscedasticity. In all the cases OLAC is unbiased. Okay, under heteroscedasticity. First point. Next point is
the variance. So the variance of B, that becomes x dash x inverse x dash omega x, वो जो ओमेगा हम लोगों ने यूज किए थे वो यूज किए. So obviously ये जो variance है, that variance is not our as same as the conventional expression. So OLAC is not efficient under heteroscedasticity. Okay. So ये एक चीज है. But we can obtain variance of beta hat that we have discussed earlier. X dash omega inverse x inverse. That is the blue. So this is obtained from GLAC. What is the GLAC of beta? Beta hat GLAC. That is equals to x dash omega x inverse x dash omega inverse y. Okay. So for example, if you consider simple linear regression model, if you consider a simple linear regression model, y equals to beta naught plus beta 1 x plus epsilon. Okay. So in that case, the variance of B, if we consider the OLAC, variance of V, that is equals to summation of xi minus x bar whole square by sigma square divided by summation of xi minus x bar whole square, उसका स्क्वायर बाहर. ये तो हम लोग को पता है. And variance of beta hat, that is obtained from GLAC, that will be equals to summation sigma I square divided by summation, not summation, it is xi minus x bar whole square. Because we are considering the weighted linear estimation. Okay, weighted LAC use करें ना, इसीलिए हम लोग कोई sigma इसके ऊपर आ रहा है. So basically, if you see variance of beta hat is less than variance of B, अगर तुम लोग try करोगे, that will be this. Okay. Because अगर इसका ratio लेंगे ना, that ratio will be the correlation coefficient between two variables. Okay, and that is less than equals to 1. And that is why variance of beta is less than variance. So basically ये जो variance of beta hat जो less हुआ है ना, जो beta hat is the minimum variance. Because we do not have any other estimator to compare with. One we have OLAC, one we have GLAC. So, and we have seen that OLAC is the linear combination of all other estimators. So obviously there is no other estimators we have in our data. So basically we can say that GLAC has the minimum variance. That is why it is the blue. Okay. So basically हेटेरोस्केलेसिटी हम लोग कर लिया. आई थिंक इसके बाद मल्टीकोलिनियरिटी है. मल्टीकोलिनियरिटी कर स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा शायद. ओके फाइन, नो इशू. हम लोग नेक्स्ट डे मल्टीकोलिनियरिटी डिस्कस कर लेंगे. इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तुम लोगों को? Okay, if you do not have any questions, so we can close this. Tomorrow we will discuss start from multicollinearity and complete the remaining one. Okay. सर मल्टीकोलिनियरिटी तो हो गया ना? Sorry, not auto correlation. ऑटो कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है. ये सिलेबस में क्या है? यस बताओ अनु, बताओ. कुछ बोले तो अनु? नो वही बोल रहा था कि ऑटो कोरिलेशन पढ़ना है. हाँ ऑटो कोरिलेशन, राइट. नेक्स्ट टॉपिक ऑटो कोरिलेशन है. इसमें हम सिलेबस देके कवर करने का रहेगा. जो सिलेबस में एक एक करके वही जा रहे हैं. तो आई होप कि देखते हैं कल कितना होता है. ठीक. ओके, लेट्स सी.
Okay, do you have any question? Sir, could we like also solve a few PYQs maybe during the lecture? Previous year question कहाँ से मिलेगा? We can discuss the sample CSIR. questions. Yeah. So from CSIR-NET maybe, because that's the only thing we have. But I think if we try to solve CSIR-NET, first of all, from regression there are very minimal questions. Yeah, we can do that. I am thinking of it. Okay, okay, from CSIR-NET and GATE also. Okay. Yeah, GATE I think would be a little easier relatively. Yes, please. Yes. I hope ki in CSIR-NET the questions are like 4.75 marks. So that questions are not coming. Definitely not coming, because these questions are only for 2 marks first of all, and second of all, only the multiple choice questions. There is not MSQ. One single answer is correct. So okay, we will discuss some previous year questions from NET and GATE. Fine. That will be fine. Okay. Okay.